Hello, students. In the previous lecture, we had discussed about the classification of bone and the classification of skeleton. Now, in this lecture, we will discuss about the classification of bone according to shape. So, according to shape, we will classify the bone under seven categories. First one is long bone, second is short bone, third one is flat bone, irregular bone, pneumatic bone, sesamoid bone, accessory or supernumerary bone. Now we will discuss about the long bone. So long bone further divided into the typical long bone and the miniature long bone. So firstly we will discuss about typical long bone. In the side of the image you can see this is the image of typical long bone. Typical long bone have following feature consist of three parts. One elongated tubular shaft known as the diaphysis and two expanded end known as the epiphysis. So upper end and lower end of the typical long bone is known, which is expanded and known as the epiphysis, and in between the upper end and the lower end the tubular shape or cylindrical shape part of the bone is known as the diaphysis of the long bone. Diaphysis of the long bone contain medullary cavity, and the typical long bone ossify in cartilage. So most of the long bone ossified by the cartilaginous ossification, and most of the long bone lie vertical in the body. They are weight bearing bone and are found in limb and act as levers for the muscles. The example of typical long bones are humerus, radius, ulna, tibia, fibula, and the femur. So these are the typical long bone. So this is all about the typical long bone. Now we will discuss about the miniature long bone. So miniature long bone or short long bone are much shorter in the length as compared to typical long bone, with only one epiphysis present at only one end. तो जैसा हमने देखा था कि टिपिकल लॉन्ग बोन में टू एपिफाइसिस होते हैं, एक अपर एंड एंड द लोअर एंड, बट द मिनिएचर लॉन्ग बोन में केवल एक ही एपिफाइसिस होगा. द एग्जाम्पल ऑफ मिनिएचर लॉन्ग बोन आर मेटाकार्पल, मेटाटार्सल and phalanges. All the metacarpal and metatarsal have epiphyses at their distal end, and except first metacarpal and first metatarsal which have epiphyses at their proximal end. यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ध्यान रखने वाली चीज़ है. ये कहना चाह रहा है कि जितनी भी मिनिएचर लॉन्ग बोन है जिसमें से मेटाकार्पल एंड मेटाटार्सल हैं को मिला के जितनी भी लॉन्ग बोन है उसमें एक ही एपिफाइसिस होगा. बट मेटाकार्पल, जब हम बात करते हैं मेटाकार्पल एंड मेटाटार्सल की, तो मेटाकार्पल में जो एपिफाइसिस होगा वो कहाँ पर होगा? डिस्टल एंड पे प्रेजेंट होता है. बट जो फर्स्ट मेटाकार्पल और फर्स्ट मेटाटार्सल है इसमें एपिफाइसिस कहाँ प्रेजेंट होगा? इसके प्रॉक्सिमल एंड पे, बेस पर प्रेजेंट होगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ मिनिएचर लॉन्ग बोन. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ओनली वन एपिफाइसिस प्रेजेंट होगा. दैट इज these are the metacarpal and metatarsal and phalanges, which are the miniature long bone. Now we will discuss about the short bone. So short bone are small in size and usually cuboid in shape, presenting six surfaces. The example of short bones are carpals and tarsal bone, which are located on the wrist and the ankle joint. And most of the short bone ossify in cartilage after the birth, except talus and calcaneal and cuboid, which start ossifying before birth. So talus, calcaneal and the cuboid bone क्या होते हैं? बर्थ के पहले ही इनमें ऑसिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है. बाकी एक्सेप्ट जितनी भी, इसके अलावा जितनी भी
कार्पल एंड टार्सल बोन्स हैं, दे आर ऑसिफाइड आफ्टर द बर्थ, बर्थ के बाद इनमें ऑसिफिकेशन स्टार्ट होगा. So these are the few examples of the short bone. In this image you can see the tarsal bone and the carpal bone. Now we will discuss about the flat bone. So flat bone are shallow plate-like bone. They form boundaries of certain body cavities. For example, cranium, thoracic cavity. The example of flat bone includes long bone of cranial wall. For example, frontal, parietal, occipital. Bone forming the thoracic cage, scapula, ribs and the sternum. तो जनरली फ्लैट बोन का मेन पर्पस क्या होता है? बॉडी कैविटीज का फॉर्मेशन करना होता है, जो सर्टेन विसरा को प्रोटेक्ट करने के पर्पस से इनका फॉर्मेशन होता है. फॉर एग्जांपल द बोन्स ऑफ द क्रेनियम जो क्रेनियल कैविटी का फॉर्मेशन कर रही हैं, जिसके थ्रू ये किसको, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं. ऐसे ही थोरेसिक केज में स्टर्नम, स्कैपुला एंड दी रिब्स थोरेसिक केज का फॉर्मेशन कर रही हैं, और ये प्रोटेक्ट कर रही हैं हार्ट, लिवर एंड लंग को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही हैं. So in this image you can see these are the example of flat bone, that is cranial bones, sternum and the ribs. Now we will discuss about the irregular bone. Irregular bone are highly irregular in shape. For example, hip bone, vertebrae, bones forming base of the skull. Now, most important type of bone, that is the pneumatic bone. नाम से ही पता चल रहा है, न्यू टर्म्स जहाँ पे भी यूज होता है, इसका मतलब है कैविटी या एयर वहाँ पे प्रेजेंट होगी. हम लोग टर्म यूज़ करते हैं न्यूमोनिया, न्यूमोथोरेक्स, तो जहाँ पर एयर प्रेजेंट होती है वहाँ के लिए हम लोग न्यू टर्म यूज़ करते हैं. तो न्यूमेटिक मीन्स ऐसी बोन जहाँ पर एयर प्रेजेंट हो. न्यूमेटिक बोन्स आर अ वैरायटी ऑफ इरेगुलर बोन which contain air filled cavity or cavities within them. These bones are mainly located around the nasal cavity. For example, maxilla frontal bone, sphenoid and the ethmoid bone. The air-filled cavities in these bones are called paranasal air sinuses. The paranasal air sinuses not only make the skull light but also add resonance to voice. They act as air conditioning chamber for the inspired air. So main purpose of the pneumatic bone in our body is ये स्कल को लाइट वेट प्रोवाइड करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैविटी, जिससे हम स्कल को होल्ड कर पाते हैं. देन वॉइस को रेजोनेंस प्रोवाइड करता है ये कंडीशन जो चैम्बर्स हैं. देन इनहेल करी हुई एयर को बॉडी टेम्परेचर से मैच करने का काम करते हैं, एयर कंडीशनिंग चैम्बर का काम करते हैं. तो मेन ये फंक्शन इनके होते हैं. मोस्ट ऑफ दी बर्ड्स जो रहते हैं उनकी बोन न्यूमेटिक बोन होती है, क्योंकि उनको फ्लाई करने के लिए लाइट वेट की ज़रूरत होती है, जिसके लिए उनको न्यूमेटिक बोन का नेचर ने प्रोवाइड करी है ना. तो हमारी बॉडी में न्यूमेटिक बोन जनरली स्कल में सराउंडिंग दी नेजल कैविटी की बोन जो रहेंगी प्रेजेंट होंगी. Now in this image you can see these are the example of few pneumatic bone. Now we will discuss about another important classification of bone according to shape, that is sesamoid bone. Sesamoid term used is for the seed. So sesamoid bone are seed-like bony nodules which develop in certain muscle tendon where they rub against convex bony surfaces during the movement of the joint. तो ये बोन ऐसी जगह डेवलप होंगी जहाँ पर मसल के टेंडन एंड दी बोन के बीच में फ्रिक्शन हो, रब हो, तो वो टेंडन को टीयर से प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, ऑसिफिकेशन चालू हो जाता है, वो कैल्शियम में बोनी नोड्यूल में कन्वर्ट हो जाता है. दैट्स वाई वी विल कॉल दैम sesamoid bone. So they develop in the muscle tendon where they rub against the convex bony surfaces. The rubbing surface of the sesamoid bone is covered with an articular cartilages. The sites of sesamoid bone, example patella,
which is developed on the tendon of quadriceps femoris in front of the knee joint. Fibula in the lateral head of gastrocnemius behind the knee joint. Two sesamoid bone below the head of first metatarsal bone in the tendon of flexor hallucis brevis. One sesamoid bone in the tendon of peroneus longus, where it bind around the cubite bone, pisiform bone, which develop in the tendon of flexor carpi, and larynx bone. So these are the few examples for the sesamoid bone. Now we will discuss about the function of the sesamoid bone. So they are mainly responsible for the pulley of or muscle contraction, alter the direction of pull of the muscle and minimize the friction of the tendon. तो मेनली इनके तीन फंक्शन है. ये मसल को पुली एज अ पुली वर्क करते हैं, पुल ऑफ डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं एंड मिनिमाइज करते हैं फ्रिक्शन को अगेंस्ट द बोन. नाउ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द सेसमॉइड बोन. द कैरेक्टरिस्टिक, ये बोन कहने में बोन बोल रहा है लेकिन ये डिफ़र करते हैं, बोन के मेन जो फीचर्स हैं उससे डिफ़र करते हैं. तो इनके कुछ पर्टिकुलर खुद के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. दे डेवलप इन द टेंडेंस ऑफ द मसल, आर डिवॉइड ऑफ पेरियोस्टियम, इनमें पेरियोस्टियम नहीं प्रेजेंट होगी, एंड ऑसिफाई आफ्टर बर्थ यूजुअली बाय द मल्टीपल सेंटर एंड लैक ऑफ हैवर्शियन सिस्टम, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट peculiarities of the compact bone absent होगा. In this image you can see this is the patella bone and this is fibula and the pisiform bone. So these are the sesamoid bone. Now lastly we will discuss about the accessory bone or supernumerary bone. So these are bones that are not generally present in our body. If present, they do not cause any harm. Sometimes clinicians confuse it with the fracture bone. Accessory bone may form due to the appearance of extra ossification center in skull sutures known as the sutural or WORMIAN bone and the non-fusion of an epiphysis. Example of TRIGONUM or VESALIANUM and the PATELLA cubitis. तो जनरली होता यह है कि एक्सेसरी बोन बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती है, बट ड्यू टू द दो ही कंडीशन है जिसके कारण ये प्रेजेंट होती हैं. ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑसिफिकेशन सेंटर अगर बॉडी में अपीयर हो जाए. फॉर एग्जांपल स्कल की अगर बात करें तो लैम्बडॉइड फीचर के पास जनरली एक एक्स्ट्रा ऑसिफिकेशन सेंटर अपीयर हो जाता है जिसके कारण हमें एक वहाँ पर अदर बोन दिखाई देती है जिसको हम लोग सुचरल बोन या वॉर्मियन बोन बोलते हैं. अब जब ऐसे बंदे का आप एक्सरे कराएंगे तो वहाँ पर हमें फ्रैक्चर जैसा अपीयरेंस दिखाई देगा, है ना, बट वो मिस डायग्नोज हो सकता है क्लिनिशियन उससे. बट आप प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक एक्सेसरी बोन ही है, नॉट फ्रैक्चर. और दूसरी कंडीशन होती है नॉन फ्यूज़न ऑफ एन एपिफाइसिस. एपिफाइसिस सेंटर के नॉन फ्यूज़न के कारण कुछ सर्टेन एरियाज में अदर बोन का फॉर्मेशन हो जाता है जिनको हम एक्सेसरी बोन बोलते हैं. जैसे है ट्राइगोनियम विच इज़ डेवलप ऑन द ट्यूबरकल पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ टैलस, और वेसेलाइनम which is located on the stylite process of the fifth metatarsal and patella cubitis. हम लोग इन सबको डायग्राम में देखेंगे. तो दिस इज द वॉर्मियर बोन या सुचरल बोन विच इज लोकेटेड ऑन द लैम्बडॉइड सुचर. यू कैन सी दिस इज accessory bone, an accessory bone. This is os trigonium which is located on the posterior tubercle of the talus. This is VESALIANUM which is located on the stylite process of the fifth metatarsal bone. This is patella cubitis which is located on the olecranon behind the knee joint, behind the elbow joint, just above the olecranon process of the ulna. So these are all about the accessory classification of bone according to the shape. Now we will discuss about the developmental classification in the next segment.